Assalamu alaikum and very good evening to all of you. You are watching your Shahid Salis channel, that is Shahid Salis Education Point. Okay, my dear. So yesterday we completed most important part of the Buddhistic education, that is Four Noble Truths and Eightfold Path. Right, my dear? So today we are going to discuss some important points related to the aims of education, and then we have a curriculum. Right, my dear? So first of all, I have already told you aims of education during the Buddhist period. तो उसमें हमने क्या कहा कि एट फोल्ड पाथ को ही वो सबसे बेहतरीन ऑब्जेक्टिव मानते हैं. तो जब हम बुद्धिस्ट पीरियड की बात करते हैं बेटा, अगर वहां पे क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द डिफरेंट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड, तो आपको हमेशा याद रखना है बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड इज द एट फोल्ड पाथ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड वन मोर थिंग जो आपको याद रखना है, वो सबसे ज्यादा एम्फेसिस यानी स्ट्रेस किस पे देते हैं, वो दे गिव इंपॉर्टेंस टू द सैल्वेशन, दे गिव इंपॉर्टेंस टू द निर्वाणा. और ये निर्वाणा हम कब अचीव करेंगे? व्हेन यू हैव अ स्ट्रेटजी. एंड व्हाट इज दैट स्ट्रेटजी माय डियर? दैट स्ट्रेटजी इज एट फोल्ड पाथ. तो इसीलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा यहाँ पे, तो वेन एवर यू आर बीइंग आस्क्ड अबाउट एम्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड, तो आपको लिखना जरूरी है कि एट फोल्ड पाथ जो है वो बिल्कुल पहली एम है. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और आइडियल्स अगर हम देखेंगे, इट इज द एट फोल्ड पाथ. फिर अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करेंगे, प्रैक्टिकल एम्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड क्या था, एंड सेम जब हमने वैदिक पीरियड में पढ़ा था. देखो वैदिक पीरियड में क्या था, वैदिक पीरियड वाज टोटली रिलीजियस ओरिएंटेड. दे डोंट गिव इंपॉर्टेंस द वर्ल्ड नॉलेज. राइट माय डियर? तो यहां पे आपको याद रखना है, बुद्धिस्ट पीरियड में दोनों इंक्लूडेड है. तो वन इज योर रिलीजियस एजुकेशन, अनदर इज योर वर्ल्ड एजुकेशन. तो दोनों इंपॉर्टेंट है. जब आपको कंपेयर करना होगा ना वैदिक पीरियड की एजुकेशन एंड देन बुद्धिस्ट पीरियड की एजुकेशन, तो ये पॉइंट आप जरूर लिखिएगा कि वैदिक पीरियड में हम ज्यादा फोकस किस पे करते थे, वो लोग वेदास पे. लेकिन यहाँ पे एक तो बुद्धिस्टिक फिलॉसफी है ही, एंड प्लस जो भी मतलब उतने ऐसे सब्जेक्ट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन इज देयर, लॉ इज देयर, पॉलिटिक्स इज देयर एटसेट्रा. हाँ, वहां पे भी वैदिक में भी मतलब आयुर्वेदिक के बारे में देखिए. आयुर्वेदा दैट हैज बीन एक्चुअली बोरोड फ्रॉम दीज वेदास. तो अगर आपको कंफ्यूजन होगा सर वहां पे भी तो मेडिसिन या आयुर्वेदास पढ़ाते थे, लेकिन बेटा वो वेदास ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये आयुर्वेदिक का कॉन्सेप्ट या मेडिसिन, एक्चुअली दे हैव बीन बोरोड फ्रॉम दीज वेरी वेदास. तो वेदास में किस तरह उन्होंने मतलब आयुर्वेदिक का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने अपने एजुकेशन में उसको भी मतलब इंप्लीमेंट किया है. तो यहाँ पे आप खास ख्याल रखेंगे कि बिसाइड्स द एट फोल्ड पाथ, वहां पे कुछ प्रैक्टिकल एम्स थे. वो क्या क्या है? दो तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. वन इज द मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. ऑफ कोर्स माय डियर, दिस एम is also the aim during the Vedic period, but here you have to explain, you have to remember that moral and spiritual development is also the aim of education during what period? Buddhistic period. Right, my dear? This is clear. Second point is the preservation and transmission of culture. Again the same aim. अगर आप देखेंगे वैदिक पीरियड में भी, वैदिक पीरियड को माना जाता था कल्चरल हेरिटेज, वेरी इंपॉर्टेंट. सो फार एज इंडियन कल्चरल हेरिटेज इज कंसर्न, वैदिक पीरियड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड. ठीक है? तो वहां पे जो एजुकेशन थी, दैट वाज द ट्रांसमिशन ऑफ द कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. एंड ये जनरेट कब होगा? ऑफकोर्स जब आप इसको प्रिजर्व करोगे. तो एजुकेशन इज द ओनली टूल दैट कैन हेल्प अस टू प्रिजर्व द कल्चरल एलिमेंट्स. जो हमारे कल्चरल आइडियाज है, कल्चरल एलिमेंट्स है, उनको प्रिजर्व करेंगे. और वही जब प्रिजर्व होंगे ना एक माइंड में, तो वो जनरेट होंगे फ्रॉम व्हाट? जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. राइट माय डियर? सो प्रिजर्वेशन एंड transmission of the culture was one of the practical aims during what? Buddhistic period. And third point, as you already know, that development of the total personality. Right, my dear? Development of total personality, that is holistic personality, all round development of a person, whether you have a physical development, social development, language development, another is emotional development, and of course moral development. So my dear, this is most important part. The development of total personality is also one of the best aim and practical aim during what? During Buddhist period.
I hope it is clear to you. तो चलते हैं next point. What was the curriculum? As I have already told you, curriculum doesn't mean only the syllabus that is included. No, no, no. Curriculum is actually the sum total of all activities that a child do inside the classroom or outside the classroom. Are you getting my point? But here we have to see the curriculum as a syllabus. We have to, but you have to keep in mind, curriculum doesn't mean only syllabus. But here, what we are going to say, that curriculum means here what type of subjects were taught during the Buddhist period. ठीक है बेटा? तो you can see, so far as the primary education is concerned, primary education में खास तौर पर 3 R's पे ज्यादा जोर दिया जाता था. 3 R's means 1 R reading, writing and arithmetic calculations, my dear. Are you getting my point? तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए फोकस किन पे ज्यादा था? बच्चे को लिखना, मतलब लिखने पे ज्यादा जोर देते थे, या राइटिंग पे ज्यादा जोर देते थे, या कुछ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे ज्यादा जोर देते थे. एंड दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम दैट वाज एम्फसाइज्ड ऑन 3 R's during Buddhist period. But at what stage? Primary stage. So education has so many stages. One is the pre-primary stage, primary stage, then you have secondary stage, then you have higher education stage, right my dear? So यहाँ पे क्या है? Primary education. तो कल अगर वहां पे क्वेश्चन आएगा, during Buddhist period the emphasis was on primary education में emphasis किस पे था? सबसे ज्यादा किस पे था? 3 R's. But besides these 3 R's, याद करो 4 noble truths जो है, basic principles of the Buddhist philosophy, that was also the part of the curriculum. So most important, before the curriculum was framed, तो curriculum को frame करने से पहले, curriculum was framed, but before you work with the curriculum, you must have the concept of 4 basic fundamental लॉज और प्रिंसिपल्स, जो मैंने नोबल ट्रूथ्स के बारे में आपको कहा था. लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग. इस प्राइमरी एजुकेशन में भी बच्चे को समझ में आना चाहिए व्हाट इज सफरिंग, what is the cause of the suffering, how can we eliminate the suffering, what are the ways of eliminating the suffering, my dear. So this is very important here. For primary education, principles of the 4 noble truths was the first importance. Then the second was emphasis on 3 R's, that is reading, writing and arithmetics. Okay, coming to the higher education, before I will explain this, first of all, जब गुरुकुल सिस्टम में क्या था? स्कूल वाज कॉल्ड गुरुकुल, द फैमिली. एक बच्चे को किस तरह रहना होता था? जिस तरह अपने टीचर के अपनी फैमिली मेंबर्स है, उनके बच्चे हैं, बीवी है, उसी तरह बच्चे को भी उनके साथ रहना पड़ता था. खाना वगैरह एटसेट्रा, वट एवर द एक्टिविटीज यम तत आस, अमिस ओस बराबर तिथै कम पेवन करन यिथ कन यम टीचर्स फैमिली मेंबर्स. सो ही वाज सिंपली, मतलब जस्ट लाइक द फैमिली मेंबर. ये जो स्टूडेंट था वो जस्ट लाइक क्या, फैमिली मेंबर की तरह रहता था. लेकिन फिर चेंजेस आ गए. तो ये गुरुकुल सिस्टम, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मोनास्ट्रीज एंड विहाराज. मोनास्ट्रीज मीन्स लोअर लेवल के लिए, और विहाराज एट यूनिवर्सिटीज. तो यहाँ पे द एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा, एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड इन मोनास्ट्रीज and viharas. But a most important question, always asked in your examination, whether it is your semester examination or it's your PG entrance examination. तो अक्सर ये question आता है बेटा. Vedic period में there was a Gurukul system, and here what is monasteries, एक separate school बनाया जाता था स्टूडेंट्स के लिए. तो स्टूडेंट की लाइफ जो है, it is not related with the what family of the teacher. No, it's not related. It is not related. So it has been changed. The concept of Gurukul system was changed from Gurukula system, and then monasteries, and then viharas और संघास. कभी कभी आप संघास भी देख सकते हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस थे वो, हाँ ये बाद में होगा इंशाल्लाह. तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या याद रखना है, एजुकेशन सेंटर्स की अगर हम बात करेंगे, एजुकेशन सेंटर इन वैदिक पीरियड वाज गुरुकुल सिस्टम. ओके, बट हियर it is monasteries and viharas. Monasteries for the primary education and viharas and sanghas for what? Higher education. You have to remember. Now coming to the next point, what are the important subjects
that were taught during that Buddhist period. You can see, my dear, I have written simply following subjects were taught: literature, law, medicine, religion, politics, astrology and military sciences. तो ये सारे आपको याद रखने हैं बेटा. तो ये इन सब्जेक्ट्स पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता था. कहां पे? हायर एजुकेशन पे. Right, my dear? And one more important point that I forget to write on the board, that is, what was the medium of instruction? याद रखना बेटा, जब हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो वहां पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज द संस्कृत. लेकिन यहां पे इट इज प्राकृत और यू कैन से पाली लैंग्वेज, बिकॉज इट वाज द लोकल लैंग्वेज ऑफ द पीपल, पाली. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. आप प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक करो, इवेलुएट करो, रिवाइव करो इन पेपर्स को. आप देखो कौन कौन से क्वेश्चंस हमने अभी तक पढ़े, कौन कौन से पढ़ने भी बाकी है. तो पाली वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन at both primary education as well as higher education. This is very important. I hope it is clear to you. So this was all about what? Aims of education during the Buddhist period. And then you have the curriculum. I talked about the primary education. The main emphasis was on the 3 R's, that is the reading, writing and arithmetic. So arithmetic means simple mathematical calculations, right my dear? And don't forget the 4 noble truths were also emphasized during the primary education as well as higher education. और जो सेंटर्स थे, एजुकेशन सेंटर्स थे, वहां पे क्या क्या था? मोनास्ट्रीज एंड विहारास. Okay, my dear. And what are the subjects at the higher education? It is literature, law, medicine, religion, politics, astrology, military sciences, etc. And one more point that you have to remember: the Buddhist education was both religious as well as worldly. Are you getting my point? And what was the medium of instruction? And medium of instruction was beta Pali. I hope it is clear to you. Okay, my dear? Okay, my dear. So these were the beautiful aims or we have discussed so far, the curriculum. Now the next slide that I'm going to show you is about methods of teaching. So what were the important methods of teaching? जो प्रैक्टिस किए जाते थे ड्यूरिंग व्हाट पीरियड? शाबाश, बुद्धिस्टिक पीरियड. राइट माय डियर? सो यू हैव टू ओनली मेंशन, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन, बिकॉज आपका जो मतलब आने वाला जो सेमेस्टर है that is MCQ based, so no need to discuss them one by one. Simply what you have to do, you have to remember them. Okay? Oral method, verbal method, जिस तरह हमने वैदिक पीरियड में पढ़ा था सर्वाना मेथड. Okay? Listening only. The teacher was reciting the mantras etc. और टीचर स्टूडेंट को क्या उसको वो जबानी याद रखना होता था. तो oral method was also there in what? वैदिक पीरियड. But after the advent of, देखो मैंने आपको कहा था ब्राह्मणिक पीरियड में एक दरख्त था जिसका नाम था बोध गया ट्री. तो बोध गया ट्री के पत्तों को क्या कहा जाता था? भोजपत्र. तो भोजपत्र वाज द राइटिंग मटेरियल. हालांकि वैदिक पीरियड में देयर वाज नो राइटिंग सिस्टम एट ऑल, बट इट हैज बीन seen in what period? Brahmanic period. Then it moved towards what? Buddhistic period. So Bhojpatra was the writing material. So my dear, you can also say that methods of teaching include not only the verbal method but also the writing method. Plus there were question answer method. Q for question, A for answer. Question answer method was also there. Discussion and debate was also there. Inductive method, that is based on reasoning and logic. So such concepts were also taught by using this inductive and deductive method. And after that you have the education through the tours. So tours, education through the tours, and theoretical and practical methods were also there. And one more point that is important, and this has been asked in your examination: recitation, reflection and acquisition. These are the 3 methods that are being frequently used in what? Buddhistic period. And so far my dear, we have discussed aims of education, we have discussed curriculum. Now this is the methods of teaching. I hope you have enjoyed my lecture. If you really enjoyed my lecture, do share and do subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get my latest videos. And stay blessed. May Allah bless you and keep always learning. Thank you.